हेलो एंड वेलकम टू क्विज स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यूपीएचएस इंग्लिश के लिए जो हम एमसीक्यूज डिस्कशन कंटिन्यू किए हैं उसी को आज फिर से लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द यूनिट लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, सो you may stay here and watch the video till end. So let's get started with first question. When was essay of dramatic poesy written and published? Options are 1666 and published in 1668. So option A ही correct है. So will not read out all other options. 1666 में लिखा गया था और 68 में 1668 में इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who are the four main speaker in essay of dramatic poesy? Again, very important question. You can't avoid the name. You can't neglect the name. You have to remember them. These four names. Who are the four main speakers? Option B is the correct answer. You just remember the name: John Dryden, Sir Robert Howard, Charles Ackley, and Sir Charles Sadley. These are the four, and इनके बदले में हालांकि करेक्टर नेम अलग अलग दिए गए हैं, बट दीज आर द फोर मेजर पीपल जो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट ड्रामेटिक ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में इनके कुछ जो हम बोलते हैं ना इमेजिनरी नेम, वो ड्राइडन ने अलग दे दिए हैं। सो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलने वाले हैं। You may remember these names, you may note down these names: John Dryden, Robert Howard, Charles Ackley and Charles Sadley. ठीक है, next question. What is the setting of the dialogue in essay of dramatic poesy? In a courtroom during a royal debate, in a barge near the Thames River after a naval battle, at a royal banquet hosted by Charles Akin, in a private saloon, at a literary gathering. So option B, in a barge near the Thames River after a naval battle. बार्ज मतलब एक नाव होती है, नाव को बोलते हैं। थेम्स रिवर के पास वहाँ ये नाव में ट्रेवल कर रहे थे, तो वहीं चार लोग बैठे थे, तो वहाँ लिटरेरी डिस्कशन शुरू हो जाता था। वो एक्चुअल में था और उसको फिर ड्राइडन ने बाद में अदर करेक्टर का नाम डाल के उस डिस्कशन को, इस वर्क को लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द डिबेट? इस वर्क में सेंट्रल टॉपिक क्या है डिबेट का? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, relative merit of classical versus modern drama, the impact of French court on English literature, role of women in theatre. So option B is the correct answer, and I'm sure that you all are aware about this fact. The relative merit of classical and modern drama. This work talks about merit or demerit of classical and modern drama. They also talk about French drama and British drama. Okay, next question देखते हैं। What literary figure does Neander famously praise in essay of dramatic poesy? Neander एक करेक्टर है इसमें, तो वो किसको प्रेज करता है? बेन जॉनसन को, शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, अरिस्टोटल को। तो शेक्सपियर इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निएंडर एक्चुअल में ड्राइडन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द यूनिटीज that are discussed in essay of dramatic poesy? Options are the three elements of comedy in drama, the requirements of plot, place and time in play, the principle of rhythm, rhyme and meter in poetry, use of dialogue and monologue in character development. So option B the correct answer, requirement of plot, place and time in play. You may remember this question. It is very interesting and confusing question, so you can remember this. Next question. What is Neander's stance on the use of rhyme in drama? He rejects rhyme altogether in favor of prose. He defends rhyme as an artful imitation of nature. And option C is he believes that rhyme is only suitable in poetry. He agrees with Kreitz that rhyme is unsuitable in drama. So option B is the correct answer. He defends rhyme as an artful imitation of nature. So option B is correct answer. Next question. What does Kreitz argue about classical drama in essay of dramatic poesy? क्राइट्स जो है क्लासिकल ड्रामा को डिफेंड करता है, नियंडर मॉडर्न ड्रामा को डिफेंड करता है। ठीक है, तो क्लासिकल ड्रामा इज मोर लाइवली देन मॉडर्न ड्रामा, ऐसा बोलता है क्राइट्स। उसका आर्ग्यूमेंट है। सेकंड है, क्लासिकल ड्रामा adheres more closely to the just imitation of nature. Classical drama is inferior to modern drama in terms of variety. Classical drama does not use the unities of Aristotle's poetic. So option B the correct answer.
As per Christ, classical drama adheres more closely to the just imitation of nature. ठीक है. So option B is the correct answer here. Next question देख लेते हैं. How does Neander counter Christ's argument about classical drama? Options are by emphasizing the importance of following Aristotle's unities strictly, by praising Shakespeare and English dramatists for their development of character, by asserting that classical drama lacks variety and modern plot are better, by focusing on the use of blank verse in modern drama. So option B correct है, by praising Shakespeare and English dramatists for their development of character. Next question देखते हैं. What is the key point of Dryden's defense of an essay of dramatic poesy? इसको again it is a printing mistake. इसको 1668 करना है. Options are to argue for superiority of French drama. Option B is to clarify his view on the use of blank verse, and option C persuades Sir Robert Howard that audiences expect a play to be an imitation of nature, not a literary representation. So option D is to critique Shakespeare's style in comparison of classical drama. So option B is the correct answer here. Next question: what is the primary purpose of Samuel Johnson's preface to his edition of Shakespeare's work? जॉन सैमुअल जॉनसन ने लिखा था प्रीपेज टू शेक्सपियर, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या था उसको लिखते समय? ऑप्शंस आर टू डिफेंड शेक्सपियर अगेंस्ट क्रिटिक्स, to argue that Shakespeare is greatest poet of all time, to introduce Shakespeare's collective work, to present a general theory of aesthetics and literary criticism. So this is again very important question. So option is option D, to present a general theory of aesthetics and literary criticism. Next question: according to Johnson, what is the key reason Shakespeare has remained relevant over time? Options are his moral teachings and virtuous characters, his ability to entertain and engage with his audience, his longevity as he has stood the test of time, his adherence to the classical unities of drama. So option C is the correct. His longevity as he has stood the test of time. टाइम के साथ उन्होंने सब टेस्ट को पास किए. दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट ही इज द ग्रेटेस्ट. सैमुअल जॉनसन ऐसा मानता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट डज जॉनसन मीन when he says Shakespeare holds up a mirror of mankind? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन बोलता है, मिरर ऑफ मैनकाइंड शेक्सपियर के लिए कौन बोलता है? तो सैमुअल जॉनसन. एक क्वेश्चन वहीं बन जाता है. बाकी इसका मतलब क्या है जब वो ऐसा बोलता है? तो ऑप्शन आर शेक्सपियर रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल इश्यू ऑफ his time. Shakespeare's work provide a deep reflection on human nature, action, and speech. Shakespeare mirrors the physical appearance of characters accurately. Shakespeare only represents the social classes of his era. तो ऑप्शन भी करेक्ट है. Shakespeare's work provide a deep reflection on human nature, action, and speech. Next question: what major criticism does Johnson level against Shakespeare's work? He fails to adhere to the classical unities, he sacrifices virtues to convenience, and writes primarily to please rather than instruct. He does not focus on moral lessons in his tragedies. His characters are too simplistic and lack of depth. So option B is the correct answer here. Next question देखते हैं. What does Johnson describe Shakespeare's genius? How does Shakespeare Johnson describe Shakespeare's genius? Options are as a perfect and refined genius, as a genius that appears at a time when England was still somewhat barbarous, as a genius influenced by classical ideals, as a genius who strictly follow moral teaching in his village. Again, very tricky question. Just think, take a pause, and take the answer. Okay, let me tell you the answer. Option B is the correct answer. Next question: what does Johnson attribute the roughness of Shakespeare's style to? Shakespeare's lack of education, the demand of his largely uneducated Elizabethan and Jacobean audience, Shakespeare's desire to please the monarchies, his need to follow classical tragedy. So option B is the correct answer here. Next question: how does Johnson respond to critics who claim Shakespeare's disregard for the unities of time and place is a defect? Again, very important question. It has lot of significance with regards to all the critics and all the other authors.
He agrees and says it weakens Shakespeare's play. He argues that the unities are irrelevant because the uh, audience knows they are in a theater. He defends the classical unities as essential to good drama. He suggests Shakespeare never understood the unities. So option B is the correct answer here. He argues that the unities are irrelevant because the audience knows they are in theater. सैमुअल जॉनसन बिलीव करता है कि जो यूनिटीज की बात की जाती है रिलेवेंट है क्योंकि ऑडियंस थिएटर में बैठे होते हैं तो वो उसको महसूस कर लेते हैं इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसा सैमुअल जॉनसन बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज जॉनसन इम्प्लाई अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक्स इन 18th century ऑप्शंस आर दैट द क्लासिकल आइडियल्स ऑफ ड्रामा like the unity should be strictly followed. Modern aesthetics reject the classical ideals of unities of time and space. That moral lesson should be the primary focus of literature. That literature should only entertain, not instruct. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है बट ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है और जो सैमुअल जॉनसन का व्यू था उसको यहाँ हमको टिक करना है सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following does Johnson dismiss as irrelevant in the critique of Shakespeare's work? Shakespeare's moral purpose, Shakespeare's use of unities of time and place. Next option, Shakespeare's character development, Shakespeare's use of language and words. So option B correct है. Time or unities वाला concept. Next question or last question of the video. What is the Johnson's overall view of Shakespeare's morality? He believes Shakespeare consistently teaches moral lessons. He thinks Shakespeare's work lack a moral purpose, but it still hold him in high regards. He criticizes Shakespeare for being immoral in all his works. He suggests Shakespeare's morality is based entirely on the ideals of the church. ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है ही थिंक्स शेक्सपियर्स वर्क लैक ए मॉरल पर्पज सैमुअल जॉनसन मानता है कि शेक्सपियर के वर्क है उनमें मॉरल टीचिंग्स की कमी है मॉरल पर्पज नहीं है बट फिर भी उनको हाई रिगार्ड देता है ठीक है तो ये कलेक्शन है 25-24 क्वेश्चंस का जो थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म वाली यूनिट से लिए गए हैं आपको कैसे लगे कमेंट कीजिए पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ या स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप यूपीएचसीएससी के इंग्लिश के लिए बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट कीजिए प्लेलिस्ट है यूपीएचसीएससी इंग्लिश और यूपीएचसीएससी इंग्लिश रिवीजन नाम से वहाँ काफ़ी वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगे 100+ वीडियोस अपलोड हैं वहाँ जरूर चेकआउट कीजिए थैंक यू